आए दिन बहुत सारे अवार्ड फंक्शन देखਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਚੁਆਇਸ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ੋਇਆ ਅਖਤਰ ਨੇ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਚੁਆਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। मैं मानती हूँ कि जब देश भर के क्रिटिक्स एकजुट होते हैं और ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करते हैं तो इसका कोई तो मतलब होगा, कोई एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होगा कि जैसे मैंने कहा विश्वसनीय अवार्ड्स होंगे जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं अच्छा कि कोई और कंसिडरेशंस नहीं होंगे, सिर्फ अच्छा काम, सिर्फ अच्छे काम को यहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। विद्या, आपको कब लगा था पहली बार अवार्ड्स के बारे में एंड आप क्या सोचती हैं? मैंने बहुत बटोरे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि इट्स वंडरफुल एज एन इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर, एक दूसरे के लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है। कभी हम अवार्ड्स देते हैं, कोई और दूसरा अवार्ड ले जाता है, पर इनको इतना भी सीरियसली ना हो कि दिल में क्लेश हो जाए या आपको दुख हो या कुछ। पर जिस साल आप जीतते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब कोई और भी जीते तो ताली बजा के निकल जाइए, क्या है उसमें। कौन से फिल्म के लिए आपको दिल में क्लेश हुआ था कि यार मुझे मिला नहीं? आई रिमेंबर भूल भुलैया के वक्त मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया था और मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि अरे परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है और फिर नॉमिनेट ही नहीं किया था। तो आई रिमेंबर मुझे थोड़ा सा झटका लगा था, पर मैं मुझे अवार्ड के बारे में बहुत लेट पता चला। CCFA क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है, क्योंकि ये एक पैन इंडिया, पैन लैंग्वेज, ऑल द क्रिटिक्स हैव कम टुगेदर एक अवार्ड देने के लिए जो बेस्ट इन इंडियन सिनेमा है, हिंदी और सारा इंडियन सिनेमा में जो है। सो आई थिंक इट्स अ न्यू बेंचमार्क एंड इट विल बी वेरी गुड। हालीवुड ਦੀ ਫਿਲਮ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲੋ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ। As people who've been living in India, I only get to see some of these films when I travel abroad, and Mami is doing a great job, and so is Nat Geo by bringing the film here to India, because there are so many people who really want to watch stuff. We can watch a lot on like Netflix and Amazon and stuff like that now, but it's a different experience to watch it in a theatre with proper acoustics, proper sound, and with other people. It's a very collective experience, so I love that. ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। Yaar, it was a big challenge. It was an amazing experience as an actor, and all thanks to Sandeep Singh for offering me this role. You barely get as an actor a chance to play a legendary character like Pradhan Mantri Modi ji, and I tried my level best as an actor. We had a good team. 9 look create करने में बहुत मेहनत लगी, प्रोस्थेटिक्स से लेकर मेकअप डिपार्टमेंट से लेकर हमारे पूरे टीम ने उसमें बहुत एफर्ट किया, एंड आई थिंक लोगों को फिल्म में पसंद आएगा। अभिनेत्री आदर्श शर्मा ਦਾ ਵੈਬ ਸ਼ੋ ਮੋਜੋ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਲੱਗੀ। Sometimes what you want might not be exactly what you need. So like in the trailer we're saying like what do you want? Do you want to eat unlimited pizza and never become fat, or you want 6-pack abs without going to the gym? So when you tell someone this, they think कि और क्या चाहिए लाइफ में, and you want 6-pack abs without going to the gym, right? What more do you want? But you don't realize that that's not really important once you lose something that you actually that actually means a lot to you, like a parent. I've lost my dad, so I know the grief of losing a parent. Like you can't compare it to anything else in the world. For me, I think you can't even compare it to anything. And probably when something like that happens, you realize that all these other things like a new phone or a new car or things like this are not important at all. So when Kevin and Kabir narrated this film to me, I was like, this is a very, very emotional story. If I do it really well and pull it off, I think I can make a lot of people cry. And there's this whole monologue that happens, that last monologue, which is like a 3-minute thing. So he asked me, he was like, can you do it in one take, and can you cry and all and do it? And I was like, yeah, let's do this. So
I think we pulled it off because whoever's watched it has really enjoyed it. So. ईशान खट्टर ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਜੂਹੂ ਵਿੱਚ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੂੰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਸੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਪੌਲ ਅਤੇ ਟਿਸਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਜੂਹੂ PVR ਵਿੱਚ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੇ ਕਾਸਟ ਓਮਕਾਰ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਰਿਤਵਿਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਰਨਬ ਹਸੀਨ ਅਤੇ ਹਮਿਕਾ ਬੋਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।